Right? And like it was with Juggun and I believe with Hinalta. मुझे तो I like Juggun तो I know and I know what a riot she can be. Oh yes. Like please tell me everything from the set because I can only imagine how much you laughed. मैं सिर्फ इसका अंदाजा ही लगा सकती हूँ कि कितना हंसे हो गया। बिल्कुल हाँ जी, जुगन जब होती हैं सेट पे तो नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट है और देयर इज नो डल मोमेंट। बट देयर इज वन थिंग दैट आई रियली लर्नड अबाउट हर इज हर द लेवल ऑफ जेनरोसिटी दैट शी हैज। इज एक्सट्रीमली जेनरस। इतना बड़ा हातिम ताई मैंने पूरी इंडस्ट्री में नहीं देखा, जिंदगी में नहीं देखा इतना बड़ा हातिम ताई कि राह चलते हुए कोई बंदा गुजरा होगा ना, उसको कहोगे यार मुझे कोई पैसों की जरूरत है या मुझे कोई मदद की जरूरत है, उसको फोन करके आके बोल देगी इसकी जाके मदद करो, उसको जाके हॉस्पिटल बुकिंग करा दो, उसको इतने पैसे दे दो। No, she's very generous like this. So ये एक चीज थी जो कि मैंने surprisingly कभी भी किसी में नहीं देखी। No, she has a very big heart. Generally, she has a very big heart, and like even I remember कि वो मेरे show पे आई थी like the last time when she was on the show, we were discussing how she throws birthday parties for her staff. सारे staff की birthday parties होती हैं घर पे, presents आते हैं, cake आता है, जी like proper दावत होती है। बिल्कुल। So I mean उस बात से आपको अंदाजा होता है कि what kind of a person she is. बिल्कुल। So I mean like I can understand that and I believe that when you say that she is a very generous, because she's a very generous person. और सेट पे जो प्रोडक्शन का तो खाने का बजट बिल्कुल बच जाता है क्योंकि जब ये आ जाती है सेट पे तो फिर ये सबके लिए ऑर्डर कर रही होती है। सबके लिए मैं ब्रांड्स के नाम क्या लूँ इस वक्त आपको पैसे पड़ जाएंगे लेने पड़ जाएंगे लेकिन आपको पड़ जाएंगे एग्जैक्टली। So fast food chain आपकी एंडोर्समेंट आ जाएगी, मैंने तो कुछ भी नहीं। फास्ट फूड बर्गर्स मुझे शायद मुझे बाद में एंडोर्समेंट मिल जाए आपकी एंडोर्समेंट के बाद। This segment was brought to you by फुल सर्कल आ जाएगा। So हाँ सॉरी यार जुगन आपका हमने ये बता दिया वैसे, लेकिन ये कि जो अच्छी चीजें बतानी चाहिए। नहीं बतानी 100% बतानी चाहिए। यहाँ पे लोग बुराई करने में सबसे आगे होते हैं और अच्छी बात किसी के बारे में बोलने में वो 3 कदम पीछे ही रहते हैं। बिल्कुल। So अगर किसी की अच्छाई हो तो वो आई थिंक दिल खोल के करनी चाहिए, like 100% करनी चाहिए। अच्छा मुझे कुछ गाना तो गा के सुनाओ, क्या गाने की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? गाने की जिंदगी में अभी एक ट्रैक रिलीज किया था मैंने यादा के नाम से। It was an उर्दू पंजाबी मिक्स ट्रैक, kind of experimenting with a new sound now. Call की sound was very rock based. Yes. Time के लिहाज से थी, अब थोड़ा times have changed. I think rock itself जो थोड़ा सा electronic music में merge हो रहा है. So I was kind of experimenting on those lines और I released a couple of tracks. एक track मैंने release किया यादा के नाम से. It had Hera Mani featured in as an actress. She's a lovely human being, a lovely friend. Yeah. She was very entertaining as well. Very entertaining. Very entertaining. I had a great time when I had her on my show. हाँ बात करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। नहीं वो imagine को वो मैं और वो अगर बैठ जाएं, हम वो बैठ के तो समझ नहीं आया कि कौन बोले, दोनों ही बोल रहे थे। कार्ड खत्म हो गए होंगे सारे। So that's true. So yeah, that I did. और उसके अलावा अभी और चीजें भी हैं पाइपलाइन में। म्यूजिक के हवाले से there are a lot of performances coming up. We're planning a lot of performances outside the country too. Pakistan में भी I'm getting that back into action in terms of music as well. TV को ज़रा काफी टाइम दिया हुआ है। वैसे ही बहुत डिमांडिंग है टेलीविजन, but अब I think अब म्यूजिक पे ज़रा और फोकस होने वाला है। And like I mean like now I think the new crop of musicians have really like set the bar super high when it comes to Pakistani music. They're very good यार। Pakistani musicians are at par with international now. They're fantastic. आप फिगर आउट नहीं कर सकते कि ये कोई हॉलीवुड से निकला है गाना या ये पाकिस्तानी। हम बहुत बर्गर किस्म के बच्चे हैं, ठीक है, like मैं एडमिट कर लेती हूँ कि हैं और मेरे हमारे फ्रेंड्स nothing wrong with being a burger यार। I mean you know like but हैं। I was sitting at a friend's house in Lahore and we were and normally when there's like you know a lot of hip hop R&B kind of music playing and we were sitting and it was just and for an hour, after an hour, I realized that for 1 hour straight, there was nothing but Pakistani music playing. There was like Hassan Rahim, Manu, Tahaji, there was like Tuta, everything was just Pakistani. And I felt, and I was sitting there, I said to a friend of mine, and you know, everyone was vibing, everyone was chilling, okay? So it was like a chill, like it was a pool scene, everyone's relaxed. And I was telling, I like said to a friend, I was like, how cool is it? Very cool. That we're sitting, like, we're the people who would never listen to Pakistani music, and we're sitting here, like vibing to Natasha Noorani and like to all of these kids who really, I'm like, you know what guys, I'm looking up to you guys, like you guys have really shaken up the system. बिल्कुल बिल्कुल। I mean हमारा टाइम था early 2000s जब हमारे मेरे तरह के musicians थे, कॉल, EP, नूरी, एक rock revolution, rock revolution आया था और people were very accepting towards that new genre. Then Death.
And then death. Now the resurrection. Yes. और अब with the Spotify और अब सारे इस तरह के जो platforms आ चुके हैं, अब सारे musicians जो बैठे हुए थे अंदर दब के एकदम बाहर आए हैं, उन्होंने एकदम धमाका मचा दिया पूरी दुनिया में. Have you thought of collaborating with any of the younger kids? Yeah, of course यार. आजकल के बच्चे जो हैं वो very talented और why not यार? Why no, not? 100%. Because I was talking to Ali Hamza and he was like, यार मैंने इनको already पकड़ लिया है and we're all like collaborating, we're doing something interesting. You know, like last year, like he was on the show and he was like, so I was like interested to know how are newer, like you know, old school musicians seeing the breadth of and the. बिल्कुल यार, बिल्कुल. अब इस दफा के आप वो जो आप जितने भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स देख लें, बड़े वाले स्पॉन्सर्ड म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स देख लें, कोक स्टूडियो देख लें, उसमें मेजरली जो है आपका सारा हिप हॉप इसमें इनकॉर्पोरेटेड है और इट हैज डन वंडर्स फॉर द कहां चला गया, पूरी दुनिया में सुना जाता है और it's phenomenal. It's been such a pleasure listening to Pakistani music. Like I've just like thoroughly enjoying it. बिल्कुल. Acha, tell me, like if you were given a choice and a chance to sing on Coke Studio, what song would you choose to sing? Anything. It depends on the producer. Yeah, I mean the producer Zulfi is a wonderful, talented individual. I have worked with him for the longest time. Yeah. So I know कि जो Zulfi's. But if you could choose a song, forget the producer. If you could choose a song to. From the last season. No, from yourself, whatever you would love. What would you like to sing? यार मैं तो I'm open for all ideas. So मैं अपने आप को लिमिट करना ही नहीं चाहता. मैं तो कहता भाई जैसा मैं टेलीविजन में भी होता है कि when I sit with the director मैं बताता हूँ कि भाई क्या चाहते हो तुम मुझसे. मैं अपनी नहीं बताऊंगा, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो. So that I would want to do something different. Get out of my comfort zone and do something different. So producer जो है वो बताए कि अच्छा भाई आज इस दफा ये चीज करते हैं. And then we think of ideas and then we mutually discuss कि अच्छा इसको हम ऐसे बना लेते हैं. So it depends on the producer and what we mutually discuss. अच्छा, so what is 2023 looking like for you? Like I mean, I'm sure there's a lot in the pipeline. So give me a इरादे बताएं आपके क्या क्या हैं? यार इरादे तो बहुत सारे हैं, काफी कुछ दिमाग में है. टेलीविजन तो चल ही रहा है. there's a project by the name of अगर जो बताया. इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है ऑपोजिट मंशा पाशा एंड असफर रहमान, दैट इज फॉर अ न्यू चैनल बाय द नेम ऑफ ऑन टीवी. म्यूजिक की कोलैबोरेशंस प्लान हो रही हैं. देयर कॉन्सर्ट्स बीइंग प्लान्ड बोथ हियर एंड आउटसाइड द कंट्री. अभी मैंने जो गाने रिलीज किए थे यादा और जीने का चस्का, दे वर रिलीज्ड बाय माय ओन प्रोडक्शन हाउस. सो आई हैव एक्चुअली लॉन्च्ड अ प्रोडक्शन कंपनी बाय द नेम ऑफ जीम फिल्म्स. वो किया है. और इसके अलावा अभी एक डिजाइनर लेबल पे भी काम चल रहा है. सो हाँ, पांचों घी में. वो क्या पांचों कढ़ाई में? हाँ. Excellent. So I wish you all the best. Thank you so much for taking out the time. पर हम उससे पहले आपको खुदाफिज कहने से पहले हम Would You Rather तो जरूर खेलेंगे. Okay. आपको पता है Would You Rather कैसे खेलते हैं? कैसे खेलते हैं? Would You Rather में आपको स्टेटमेंट एक दूंगी. You have to choose either this or this. Okay. तो इधर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. सही है. Would you rather and there's no कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ओ अगर ये ऐसे होगा या वैसे होगा, nothing. मैं को हाँ डिप्लोमेटिक जवाब ना दूं, मुझे एक देना पड़ेगा. आप you have to choose one of the two. Would you rather travel to space with Neil Armstrong or travel back in time to Rome with Julius Caesar? यार रोम जाना चाहूंगा. स्पेस में जाके क्या करना है यार? स्पेस में कुछ है ही नहीं यार. पूरी दुनिया है स्पेस में. दुनिया खाली सन्नाटा, ना टीवी. तो उसके अलावा like I mean I would love to go. I mean it's one of my actually it's on my bucket list that one day if I could afford it I'm going to go up in space. एक दफा जरूर जाऊंगी. सही है. So I don't know what time in my life that I'm able to do it, but I definitely want to go. Yeah, good luck. Like I want to feel like what a little zarra of like you know मैं अपनी mortality feel करना चाहती हूँ. Elon Musk को फोन करके खड़काएं जरा. हाँ मैं कराती हूँ. Next. By the way मैं बहुत capable हूँ, मैं उससे दोस्ती भी लड़ा रहा हूँ, मैं चली भी जाऊँगी. मैं actually I am capable of many things in life and if somebody is capable of going into space I am capable. तो कहेगा आए प्लीज आए, हम आपको पहले आपको टेस्ट फ्लाइट पे आपको लेके जाते हैं. Okay, would you rather defeat Darth Vader or conquer Sauron? Darth Vader. हाँ बिल्कुल. I was again confused about this one because I'm a huge Lord of the Rings and Star Wars fan. So Star Wars ज़्यादा देखी है मैंने, Lord of the Rings इतनी follow की नहीं surprisingly मैंने, so I would. But Sauron I was like, okay, final one. Master every musical instrument or be fluent in every language. ये मुश्किल है वैसे, क्योंकि ट्रैवलिंग हमारी काफ़ी है तो हाँ I think language में fluency ज़्यादा काम आएगी. Yeah. I would also pick that. Perfect. Thank you so much. It was a pleasure having you on the show again, and I hope that next time जब आप आएं तो आपके पास कोई एक और plethora हो of चीजें
hopefully, yes. New things that we will be discussing. And take care of yourself. Thank you so much for taking out the time. Thank you. It's been a pleasure having you back on MMP. Same here. And I hope you guys enjoyed the segment. Please don't forget to subscribe to the channel, hit the notification bell so you can be part of the Moment as Mixed Plate family. And I'll see you next time. Take care.